ભાવનગરમાંથી 5 શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ ઝડપાઈ હતી। એસઓજીએ પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન મહિલાઓના મોબાઈલમાંથી બાંગ્લાદેશના કોડવાળા નંબર તેમજ સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવતા પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। ભાવનગરના એએસપી ઘનશ્યામ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે યાર્ડમાં આ મહિલાઓ મોઢું ઢાંકી સફાઈ અને મજૂરીનું કામ કરતી હતી। પોલીસે પૂછપરછ સાથે તેમના મોબાઈલ ફોનની તપાસ કરતા બાંગ્લાદેશના કોડવાળા નંબર મળી આવ્યા હતા। આ લોકોએ કોઈ બનાવટી ભારતીય દસ્તાવેજો બનાવવામાં આવ્યા છે કે કેમ તે દિशाમાં तपास हाथ धराई है। ये प्योरली एसओजी की बड़ी अच्छी कामगिरी है कि पेट्रोलिंग दरमियान इनको कोई शंकास्पद महिला पूरा मुंह ढका हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो उनके चाल चलन से उनको ऐसा लगा कि ये तो क्या है मतलब, तो उसको उनको पूछपरछ करना शुरू किया। पर्स वर्स की झड़ती ली तो उसमें कुछ बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट मिल गए, नंबर में +88 मिल गया। और जो आगे की कार्रवाई होगी पुलिस की, और एक अगर ऑपरेशन भी लॉन्च करने में आएगा तो हम बिल्कुल उसमें कायदेसर कार्रवाई ऑर्गेनाइज स्केल पे हम करेंगे। बहुत ये साथ में ही हमको मिली है और साथ में ही रहती थी, और साथ में इनके आपस में भी इनके फ़ोन में देखने को मिला है कि आपस में कांटेक्ट करती थी, एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी इनके में सेव है।